owned capital and borrowed capital. Meaning, owned capital, it is that capital which is contributed by shareholders. जो shareholders shares लेते हैं और मनी इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, उसे कहते हैं owned capital. Now borrowed capital we will see. It is that capital which is borrowed from creditors. ये एक लोन है. It is also called as a debt capital. Second one, source. This capital is collected by issue of equity shares and preference shares. जैसे हमने पहले भी देखा है, shares are divided into two part, that is equity shares and preference shares. जब हम मार्केट में इक्विटी शेयर्स या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओन्ड कैपिटल. दैट इज़ अ सोर्स. मीन्स सोर्स कैसा है आपका पैसा इकट्ठा करने का? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ बोरोड कैपिटल में देखते हैं. इट इज़ कलेक्टेड बाय द वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन फ्रॉम द बैंक्स, financial institutions, etc. So these are the ways by which we collect a borrowed capital. Third one, return on investment. The shareholder gets a dividend as income on their investment. Rate of dividend is fluctuating in the case of equity shares but fixed in the case of preference shares. Third one, return on investment. The shareholders get dividend as income on their investment. Rate of dividend is fluctuating in the case of equity shares, but it is fixed in the case of preference shares. Preference shares वालों को fixed rate of dividend मिलता है, but equity shareholders get fluctuating rate of interest because it depends upon profit. जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तब उनको डिविडेंड मिलेगा, बट दैट इज़ नॉट फिक्स्ड. Whereas in the case of borrowed capital, it is a debt capital. The debt capital holder gets interest as a income on their investment and interest is at a fixed rate. जब borrowed capital जब हम लेते हैं at the time of issue, तभी interest rate फिक्स किया जाता है. Whether company earns a profit or not, अगर प्रॉफिट हुआ या न हुआ तो भी कंपनी को इंटरेस्ट ये देना ही पड़ता है एट अ फिक्स रेट. नाउ फोर्थ वन, द शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी. जितने भी शेयर्स जिसने शेयर्स खरीदे हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं एंड दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. The debt holders are the creditors of the company. In the case of borrowed capital, they are the debt holder. Fifth one, voting right. Equity shareholders enjoys a normal voting right at a general meeting. जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं उनको वोटिंग राइट होता है. Whereas in the case of borrowed capital, they are the creditors of the company, so they do not enjoy the voting right at a general meeting. Sixth one, repayment of capital. Shareholders do not enjoy the priority over the creditors. They are eligible for the repayment of capital only after making the payment to creditors at the time of winding up of the company. जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेट होती है, या तो उसको हम वाइंडिंग अप कहते हैं, इन दैट केस शेयर होल्डर्स का क्लेम ये लास्ट होता है आफ्टर क्रेडिटर्स. The creditor gets a priority over the shareholders in the case of return of principal amount at the time of winding up of the company. जब कंपनी बंद हो जाती है तभी borrowed capital holders जो होते हैं, they are the creditors of the company. They have the first claim to receive their money before equity
or preferred shareholders. Seventh one, charge on asset. Shareholder do not have any charge on the asset of the company. उनका कंपनी के एसेट के पर कोई अधिकार नहीं होता. In the case of borrowed capital, the secured debenture holder जिन्होंने secured debentures लिया है, जैसे हमने पहले भी देखा है डिबेंचर्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, उसमें एक टाइप होता है जिसे कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर. सो द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स हैव अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के एसेट के पर, प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम लगा सकते हैं, चार्ज लगा सकते हैं.